Hello everyone. Good evening. क्या हाल चाल है सबके? I once again welcome you all to one more market क्या लगता है live. So is my voice clearly audible and the chart of Nifty is visible? Please say yes in the chat box if it's there because I want to be very sure about whether you are able to hear my voice clearly and my chart is clearly visible to you. Okay, let's wait for other people to join in because again it's a Sunday evening, but we are going to have a lot of interesting discussion on markets, on how we are going to see the next week shaping up, right, and what all is very important for us to decide for the coming week, right. Okay. Perfect. So, of course, as decided, last week was a very topsy turvy ride, but on Friday we had a very good rally, and it was after a long time the markets gave a good bullish move, right? Though, of course, still I won't say that yes, the worst is over, right? But yes, we are definitely like a good comeback has come, and that was with good news because the Adani saga was a very big thing for the markets or as a sentiment wise because that clearly meant that lack of liquidity was there and plus जो एक हम बोलते हैं ना कि market works on sentiments, तो sentiments were bad. Okay, so of course that has become good and सबसे अच्छी बात क्या थी कि that the last Friday's rally was a broader participation of the overall sectors, right? तो ऐसा नहीं था कि एक one particular sector, one particular stock or even in the small and mid caps we had great participation. Okay, so that was very good to see where we had great participation from the mid caps, from the small caps as well as the overall markets, right? Clearly when mentioned Bank Nifty was looking more stronger in the last week, right, and that's why we saw Bank Nifty outperforming Nifty. Yes, and definitely एक और अच्छी चीज हुई कि Bank Nifty had overall participation of both PSU as well as private. Of course, PSUs were outperforming on Friday because of the Adani news, right? Because Adani's major lenders, I think, were PSU banks. Okay, so that was there definitely. Okay, so एक चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि whenever we are kind of checking the markets, हमें चेक करना है the major four indices as I always say Nifty, Bank Nifty, small and mid caps, right? So we had a overall participation in it. Okay, now coming to Nifty, a lot of people ask me कि sir bottom हो गया है क्या, now the markets are going to rally or what, right? But it's not going to be that easy, right? Because अगर markets को यहाँ से rally करना है that has to first definitely cross the biggest hurdle right now is 17,800. Yes, वहाँ तक markets जा सकते हैं and वहाँ तक एक अच्छी rally भी बन सकती है और 200 पॉइंट की, but that is going to be a very big hurdle because there's a gap also over there which Nifty can fill. ठीक है, but ये gap के ऊपर sustain करना is very important. Yes, the good thing is we are again back above the 200-day moving average. It is a good thing, right? और हमने एक थ्योरी डिस्कस की थी कि राइट फरवरी का मंथली लो, फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है. आई थिंक नाउ दिस विल ऑफ कोर्स हेल्प यू टू अंडरस्टैंड आल्सो कि यस मार्केट्स में थ्योरी बहुत काम आती है कि 3 रेड मंथली कैंडल्स, राइट, वी आर डिस्कस, हमने वेरियस एग्जांपल्स भी डिस्कस किए थे कि 3 रेड मंथली कैंडल्स के बाद अगर एक ग्रीन कैंडल डेफिनेटली आया है इन द लास्ट 10 ईयर्स, राइट, लास्ट 10 साल में हम कोई भी ऐसा अपॉर्चुनिटी देखे, चाहे वो 2000 अप्रैल 2022 में हो, चाहे अभी है, चाहे कोविड के टाइम पे हो, चाहे उसके पहले हो, जब भी 3 रेड मंथली कैंडल्स आए वी हैव सीन अ वेरी गुड ग्रीन मंथली कैंडल इन द नेक्स्ट मंथ. ठीक है, बट उसका क्राइटेरिया ये है कि आपका फरवरी का जो लो है दैट इज 17,255 वो ब्रेक नहीं होना चाहिए. सो वही हुआ, हम थर्सडे को थोड़ा नीचे गए, वी काइंड ऑफ एक ब्लफ था कि यस अब तो फरवरी का लो ब्रेक हो जाएगा, बट वो ब्रेक नहीं हुआ
and we of course saw a good rally on the upside. Okay, so that is a very very important thing. February का लो is our stop loss for all the longs, तो ये चीज क्लियर है. ठीक है, अब ऊपर में 17,800 will definitely act as a hurdle, right? And if you are able to close above it, then we can like say that yes, a short term bottom is in place, because that will mean a trend reversal, right? तो 17,800 अगर ब्रेक हो जाता है एंड वी क्लोज एटलीस्ट 2 दिन का क्लोजिंग या एक वीकली क्लोजिंग आ जाए, that would be a strong trend reversal, because 17,800 was the level that market was defending till now, right, on the earlier base, right? तो अभी 17,800 अगर break हो गया तो the base will again this will be the lower base and markets will be on the bullish zone. जो अभी markets अभी है not in the favor of bulls also, not in the favor of bears also, तो अभी it's a 50-50 thing for both of them, right? But जैसे ही I think the market crosses 17,800 or breaks 17,255, we'll have a big move ahead. Okay, so for Nifty, these are the most important levels to watch out for. Okay, and definitely for the next week, as I say, these two levels will be very important, but the biasness should be on the bullish side, because overall sentiment is good. Yesterday one of the Fed committee, जो Fed के committee में, they have also told that Fed का जो rate hikes है, that will not happen in a very fast pace, and they're expecting maximum 25 to 50 bips a days, right? That is also positive, and that's why I think on Friday this news had come Friday after market for us, and we saw a good rally on the US markets as well. So अभी दो चीजें markets को गिरा रही थी. One was the inflation worries, right? And second one is the Adani saga, right? Because again, that was a negative for the overall sentiment for the markets, right? So both of them look कि दोनों में कुछ ना कुछ चीजें better हो रही है, right? Which is very very important for us to understand. कि अगर चीजें better हो रही है तो definitely वहाँ पे हम एक चीज बोल सकते हैं कि the markets will give that a thumbs up, and एक further 200-300 point की rally आ सकती है, right? But at these levels 17,800, 17,850, we'll have to be again cautious. Okay, does anyone else have any other reasons which you feel that the markets were correcting, right? Because market correction के usually दो reasons होता है, या तो कुछ negative news is going on all over the world या India में, या definitely one is the liquidity, right? तो liquidity से markets go up also, and liquidity से market go down. अगर liquidity gets crunched, then the market goes down, and if the liquidity is excessive in the markets like we saw in 2021, जब excessive liquidity आई, retails were huge. अभी हमने देखा कि retail participation has decreased drastically because of what the market has happened in the last 1 year, right? So liquidity also drives the market, and of course sentiment is like parallel to the liquidity in the market. So sentiment अगर अच्छे हैं तो liquidity definitely comes into the market. So I would like to ask the audience as well कि whether you feel that जो liquidity और जो sentiment है that has become good. So is there any other factor which you feel that can drive the market lower? Because there is one more thing which is very very important, which I'll highlight in the coming days, right? Is what we have to think about. Okay, anyone like to comment on this? No? Okay, so till we receive more people, so maybe yeah, so there's no much other reasons for the markets to be there in this range, right? So overall next week के लिए Nifty view is very clear. 17,800 and 17,255 are the levels to watch out for. Okay, Bank Nifty should outperform and looks very bullish to me, because overall Bank Nifty had not broken the previous lows, right? Previous support से घुमा, and this is a very very bullish candle which it made over here, and then वहाँ से and continues to remain bullish, right? 41,600 will definitely act as a strong resistance, and that is where I see a Bank Nifty to take a small break, right? But if it breaks 41,600 and gives multiple, at least two closings, then Bank Nifty can also outperform. Okay,
कमिंग टू द स्मॉल एंड मिड कैप इंडेक्स, यस एक बहुत ही क्रूशियल लेवल्स मैंने आपको दिए थे वीकली क्लोजिंग बेसिस, राइट 9200 वहाँ से एग्जैक्टली रिवर्स किया है. एंड स्मॉल कैप इंडेक्स हो या मिड कैप इंडेक्स हो, ऑन वीकली चार्ट्स दे हैव रिवर्स फ्रॉम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन. तो मैंने एक रेक्टेंगल आपको ड्रॉ करके दिखाया था, तो जब तक ये रेक्टेंगल को तोड़ता नहीं है तब तक आई डोंट थिंक सो द स्मॉल एंड मिड कैप इंडेक्स लुक्स बैड, बिकॉज व्हाट यू सी इज डेली चार्ट्स में उस लेवल्स को ट्राई किया था ब्रेक करने का, बट सेकेंड डे ओनली वी हैड फ्रेश बाइंग, राइट. तो हम लाइक फेक आउट बोलते जो कि एक बार पैनिक करवाने के लिए उस लेवल्स को ब्रेक किया, पर अल्टीमेटली इट कुड नॉट सस्टेन. तो कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन इन सच मार्केट्स हैज टू सस्टेन. आप एक दिन के डिसीजन पे नहीं ले सकते कि वेदर इट्स अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट और अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन, ठीक है. So overall small and mid cap index looks bullish, have reversed from a good support zone. Mid cap index in fact has formed a bullish engulfing on the weekly charts, right? If you are those who know about trading patterns, right? So this is a bullish engulfing pattern which has been formed, okay. And the best part was the dollar index as well as our USD INR. So there was a very good correction in the dollar index as well as our USD INR in the last day, right? तो dollar index definitely 105 का लेवल मैंने आपको दिया था लास्ट लाइव में कि 105 का लेवल will acting as a very crucial resistance. अगर इसको ब्रेक कर दिया तो definitely then markets will go more lower, right? तो dollar index and USD INR correcting is a very positive sign for our markets, okay. Pushparaj, can we buy at this level? So what are you asking, Pushparaj? Be very specific. I do not get what are you asking for. Okay. Then let's go to Dow Jones and Nasdaq, right? So Dow Jones and Nasdaq charts again looks bullish, reversed from the weekly support zones, right? And definitely एक अच्छा reversal आया, okay. Nasdaq भी again has reversed from a very good support zone, right? So IT stocks पे definitely एक नजर रहनी चाहिए, because Nasdaq has risen almost to 2.5% last day. So IT stocks which have been stronger have better chances of reversal from these levels. Okay. Then let's of course US markets अगर अच्छा करेंगे, and यहाँ पे already sentiment has become positive because I hope I have already shared in the tweet also that GQG partners जो जिन्होंने इन्वेस्ट किया है इन अडानी, दैट दे आर वेरी बिग, दे आर मैनेजिंग मोर देन $92 billion. तो दैट ब्रिंग्स अ वेरी बिग सेंटिमेंट बूस्ट फॉर द अडानी स्टॉक्स, राइट. सो इफ दैट इज देयर, ऑफ कोर्स यहाँ वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व एंड ग्लोबल प्रॉब्लम भी सॉल्व, दैट इज इन्फ्लेशन, राइट. सो बोथ वेज दैट इज गुड फॉर द मार्केट्स. तो यूएस मार्केट्स अगर अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे भी एक सेंटिमेंट बूस्ट रहेगा. सिल्वर एंड गोल्ड, एज आई टोल्ड यू, आई एम वेरी बुलिश फॉर लॉन्ग टर्म. सिल्वर पे मैंने $1,800 का लेवल भी दिया था एंड इट एग्जैक्टली रिवर्स फ्रॉम दोज लेवल्स, राइट. एंड सिल्वर में भी मैंने बोला था लास्ट लाइव में, दोज वर दैट कि 20.5 से $20 आर वेरी गुड सपोर्ट लेवल्स, एंड एग्जैक्टली अगेन सिल्वर रिवर्स फ्रॉम दोज लेवल्स एंड इट्स डूइंग गुड. सो इट्स अ पोजिशनल व्यू. Gold, silver, I am bullish positionally. I'm not. It is not any trading advice or something like that. Again, disclaimer. Whatever stocks or whatever we discuss are purely for educational purpose. These are not recommendations. Please consult your financial advisor. This is purely an educational webinar. Okay. Yes, Pushparaj, in small and mid caps, whichever is showing strength and have good breakouts, you can definitely invest, because overall जो सेक्टर है या सेक्टोरियल चार्ट है स्मॉल मिड कैप्स का, देयर आर लुक, स्पेशली द मिड कैप चार्ट ऑन द वीकली लुक्स गुड. तो कोई भी रीटेस्ट का या नीचे अपॉर्चुनिटी मिले ऑन द ब्रेकआउट्स, दिस आर गुड अपॉर्चुनिटीज टू एंटर. ओके, नाउ फ्रेंड्स, बिफोर आई गो, सो आज अब मैंने आपको जो है जल्दी से आपको एक नया चीज़ भी सिखाना था, राइट. सो हाउ डू यू कैच स्ट्रेंथ इन अ पर्टिकुलर सेक्टर एंड अ पर्टिकुलर स्टॉक, राइट. इसके लिए मैंने आज 2 एग्जाम्पल्स लिए है, बिकॉज जैसे मैंने आपको कहा मार्केट 2.0 इज मोर ऑफ लर्निंग एंड थिंकिंग अबाउट और टेकिंग द मार्केट्स फ्रॉम डिफरेंट एस्पेक्ट, राइट. हम मार्केट्स को जिस एस्पेक्ट से देखते हैं, अगर आप उसी तरीके से देखते रहेंगे तो मेकिंग मनी इन 2023 विल बी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज नॉर्मली मार्केट्स का डायनेमिक्स चेंज वेरी फास्ट, राइट. तो जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको एग्जांपल दिया था कोटक का एंड एक्सिस का, राइट. तो दिस टाइम आई एम गोइंग टू गिव एन एग्जांपल इन आईटीसी एंड एचयूएल. अगेन दीज आर नॉट recommendations, these are purely for education purpose I am taking this recommendation, right. So ITC has been an outperformer in the FMCG index, right.
एंड जैसे ही मार्केट रिकवर किया, इट वॉज द फर्स्ट वन टू राइज एंड वॉज अप 2.5%, राइट. Despite HUL, which has been a laggard, continues to stay a laggard, and despite market recovery, ये recover नहीं किया, right? So आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि once the market recovers, everything does not recover. आपको वो स्टॉक्स देखने हैं जो मार्केट करेक्शन पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, जो 52 वीक हाइज के आसपास है. तो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई टीच टू माई स्टूडेंट्स ऑल्सो, राइट. सो हमारे जितने भी कोर्सेज है, चाहे वो टेक्निकल्स हो, टेक्निकल्स रिकॉर्डिंग हो, डेरिवेटिव्स हो, एवरीवेयर आई टीच ऑल द स्टूडेंट्स की कहाँ स्ट्रेंथ है आप उसको फाइंड करो, राइट. एंड इफ यू आर एबल टू फाइंड द स्ट्रेंथ, राइट, चाहे वो आप RS लाइन लगा के करो, चाहे वो नॉर्मली, अगर मैं आपको बोलूँ कोई RSI आपको नहीं लगाना, आपको सिर्फ ये देखना है कि जब मार्केट्स गिर रहे हो, टैक्टफुली यू शुड वॉच कि कौन से स्टॉक से वो ज़्यादा नहीं गिर रहे, जो 52 वीक हाइज के आसपास है. ITC even after a drastic fall was down just 2-3% from its 52 week highs, right? तो आपको वैसे स्टॉक्स में ढूंढना है कि जब रिकवरी आएगी, एंड प्लस थोड़ा सा लॉजिक कि अभी इस वाले जो आने वाला टाइम है, राइट, दैट इज गोइंग टू ग्रेट फॉर होटल्स, एज होटल स्टॉक्स हैव ऑलरेडी, आपने इंडियन होटल्स की कमेंट्री या किसी के भी होटल स्टॉक्स के जो ओनर्स उनकी कमेंट्री सुनी होगी, सो दे आर टू डू वेरी गुड. सिगरेट ऑलरेडी ITC का जो मेजर बिजनेस है वो उसने बहुत अच्छा गाइडेंस में दिया ही है फॉर द नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स, राइट. एंड प्लस ओवरऑल एज अ कॉन्ग्लोमरेट, पेपर स्टॉक्स अगेन आई हैव बीन पोस्टिंग वेरी गुड नंबर्स. तो ITC एज अ कॉन्ग्लोमरेट इज गोइंग टू डू गुड, वेयर एज HUL हो सकता है उतना अच्छा नहीं करे, बिकॉज इस बार जो रूरल डिमांड है दैट्स गोइंग टू बी वेरी लेस, और रूरल related stocks are going to be affected because the monsoon is not going to be that great, right. जो हमारा med department का आया कि this is going to be, the summer is going to be very very hot, and definitely जो monsoon है वो उतना अच्छा नहीं होने वाला. So this is a very logical thing also, जहाँ पे आप चार्ट और लॉजिक को कंबाइन करते हो and then you again execute the trade. So logically of course HUL is going to continue to stay weak because जो रूरल रिलेटेड प्लेज है, चाहे वो ऑटो स्टॉक्स हो. इफ यू सी लास्ट ऑटो स्टॉक्स, निफ्टी ऑटो, इफ आई शो यू, डिड नॉट रिकवर दैट मच. व्हाई? बिकॉज ऑटोज अगेन आर रिलेटेड टू द रूरल थीम, रूरल डिमांड, स्पेशली स्टॉक्स लाइक एस्कॉर्ट्स, M&M, हीरो मोटोकॉप, जो पूरा रूरल थीम पे डिपेंडेंट है, राइट. तो देखो उसमें कोई रिकवरी आया ही नहीं. व्हाई? बिकॉज द रूरल रिलेटेड थिंग्स वोंट वर्क दैट मच. तो आपको मार्केट रिकवरी में कौन से स्टॉक्स में, योर जॉकी शुड बी राइट. आप स्टॉक सिलेक्शन सही से नहीं करोगे, मेकिंग मनी इन सच मार्केट्स वुड बी वेरी डिफिकल्ट, राइट. सो ऑफ कोर्स दोज वांट टू लर्न एक्सटेंसिवली, नाउ वी हैव 2 थिंग्स विच वी प्रोवाइड यू. हमारे स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली वी हैव टाइड अप विद अनदर प्लेटफॉर्म, जिसपे हमने एक डेफिनेटली वी डिड अ वेबिनार ऑल्सो, उसका एक्सेस ऑलरेडी इज देयर विद एवरीवन. So we have tied up with Anastrat, where it gives you a experience about whatever you have learned. So suppose you have learned bullish engulfing candlestick, so you are able to practice on that, right? If you have learned, for example, a hammer candlestick, तो आपको practice करना है. So this is where I have to go long, right? जैसे bullish engulfing बना, I go long, right? My entry is 515, so I get next chart. So you can practice over here, right? Practice के बाद definitely आपको एक score मिलेगा, right? Where you will get the score. Then you can of course join the community, and also you can kind of virtually invest. तो virtually वहाँ पे invest भी कर पाओगे, right? So we have turned it, our classes into a practice also, right? तो हमारे से जो भी कोर्स करता है, of course they get Anastrat free for the next 10 days, and of course and at a very subsidized price of what they charge for normally others people, right? So those who are willing to learn and those who are willing to practice, they want to first start with virtual money, because you get virtual money, you can take live trades, you can link your broker over there, and you can take live trades also, right? So जो ये 9,000 का package है, we get at a very discounted rate for 12 students. Yes, definitely those who want to learn and those who want to practice, you can be a part of us. I'll tell my team to share our contact as well as details for this, for the next batch which is coming. So you can contact our team and you can definitely be a part of it. Okay. So coming back to the markets, I hope this example helped you a lot, because ये example मैंने इसीलिए लिया so that it helps you in understanding where the strength is and where it's not there. Okay. Correct.
So now I would like to definitely love to hear from you all the questions, whatever your view on market is, because आज मुझे ज़्यादा कुछ share करने को था नहीं, so I thought I'll keep it very small and sweet. We'll do a half an hour live and definitely फिर हम next week अगर और ज़्यादा markets में कुछ reaction आता है, we'll do a live during the live weekend. So I'm planning to have another live on Wednesday or Thursday where I have more active participation. Okay, so I'll be open to questions and I will love to hear from them. Nifty P is cooling down. Yes, definitely Nifty का P is the price to earning ratio is definitely cooling down, but that is a long term factor. इसमें short term में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, right? So that doesn't matter that much. Small and mid caps, yes, you can definitely invest, but again the stock selection should be very very strong, because stock selection में अगर आपने गलती कर दिया, so it will be very difficult for you to come back. Okay, because ultimately क्या है, as I showed you, strong stocks will come back very fast, but not all stocks will definitely come back strongly. Okay. GenCon short term. You on Power India for long term. Okay. So stock specific questions I'll definitely take, but again the view will be very long termish and there will be no recommendation. Again, it's for purely educational purpose. Okay. But I'll prefer more of those questions which are market related, right? Because again स्टॉक स्पेसिफिक मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से आपको स्टॉक का एनालाइज करना है, rather than me giving you the view. So GenCon, again you can see the strength in the stock, right? मार्केट गिरने पे it is not falling and मार्केट बढ़ने पे it is rising and it's on a weekly breakout, right? Definitely इसमें मुझे आपको मेरा व्यू जानने की जरूरत ही नहीं, you can analyze on your own. अगर आपको सीखना है, definitely there are many places, there are other YouTube videos, there are courses are there, so you can learn from them, because I want you to analyze these stocks, not me. Okay, so Power India, again someone is asking Power India for long term. Okay, I think it is Power Mech or Power India High Tech Energy. Okay, so again High Tech Energy, very strong charts, again showing a lot of strength. एक VCP pattern है, so once it breaks out I think this can do very good, right? So again the chart is very strong, as I showed you कि जब market गिर रहा है, this is not falling, and the market rising, it is on the verge of breakout. Definitely you should keep this on radar. Okay, Vaishal Pennar Industries, again very strong stock, showing strength in a weak market near 52-week highs. Then yes, definitely, but एक weekly bearish candle है, तो कोई भी retest पे आपको सोचना चाहिए. So overall, see, market क्या लगता है 2 point, I will try to answer more of those questions which are linked to your queries on indices or whatever, something you want to understand, because stock specific मैंने देखा answer करके कोई फायदा नहीं है, because that is a very small term thing. I want you all to focus on the learning part. एक बार आप stocks अपने overall ये समझ लिया ना कि बैटिंग कैसे करना है, फिर आप फुल टॉस को भी चौका मार लोगे, यॉर्कर को भी मार लोगे. बट इफ आई जस्ट कीप ऑन आंसरिंग यू कि हर बॉल पे क्या करना है, then it will be very difficult, right? So I want you all to learn these concepts, like we learned about ITC and HUL. तो basic logic लगाना plus chart में उसको imply करना, this will help you a lot. Again stocks with Federal Bank, again very strong, very good charts, right? And it's not participating the fall, plus the commentary has been very good. तो overall मुझे I think बताने का कोई ज़रूरत ही नहीं है. And normally I remember all these charts because I see it every day. Okay. So I think we'll do a more bigger kind of more specific live on next week, right? And I would request all of you to be a part of it. Okay, weekday पे करेंगे, and of course next weekend we have a surprise for you, because the course which we are launching will have both the people, Amit Seth and Ashish Baheti, Sunday in the morning with us, right? So don't miss that live, because
हो सकता है हम वो जूम के थ्रू ही करेंगे, राइट, एंड विल हैव अ वेरी गुड सेशन जहाँ पे दे विल डिस्कस कि कैसे वो प्राइस एक्शन और ओआई को देख के ट्रेड करते हैं एंड व्हाट दे आर गोइंग टू टीच इन दिस, बिकॉज बोथ आर a great expert in their lines, right, and they regularly come on different business channels, right, so it will be great fun for having them with us, okay. Those who are interested again in this course, our team will share the link is already there in the chat box, right, and plus you can go to the more option on the जो details है वीडियो के, so वहाँ पे भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है. So you can again see that, be a part of it. This is going to be great learning because दो बहुत ही experienced traders who are having 20 years of experience in trading together, they will be teaching you on markets, on different things, right. This is going to help you a lot, okay. And उस वहाँ पे हम stock specific questions भी लेंगे and definitely हम try करेंगे कि score extensive बनाए, right. But again my focus here would be definitely to teach you in the right direction, okay, and to go you the overall market view, ठीक है. तो ओवरऑल मार्केट व्यू हमारा क्लियर है. शॉर्ट टर्म के लिए डेफिनेटली लुक्स बुलिश निफ्टी, बट ऊपर में हर्डल्स है तो ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग करना है हमें, ठीक है. सेकेंडली स्मॉल मिड कैप्स में सिलेक्टेड वंस विल डू गुड, ठीक है. एंड ऑफ कोर्स वो सिलेक्टेड वंस को कैसे पिक करना है हमने देखा, राइट, जैसे वी सॉ द एग्जांपल्स राइट नाउ, ठीक है. वन मोर आई विल गिव यू अ वेरी वेरी सिंपल एग्जांपल, राइट, कि हाउ डू आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्गर स्मॉलर एंड मिड कैप स्टॉक्स जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, राइट. दोज हु आर नॉट फॉलोइंग द मार्केट्स एंड द मार्केट्स रिकवर कर रहे हैं, दीज आर द स्टॉक्स विच आर फर्स्ट काइंड ऑफ ट्राइंग टू मेक अ 52 वीक हाई, राइट, बिकॉज वही स्टॉक्स वैसे ही स्टॉक्स है जो मार्केट्स में स्ट्रॉन्ग रिकवरी भी लाते हैं. एंड डेफिनेटली आई थिंक इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया, सिग्नीटेक टेक्नोलॉजीज, राइट. So it's a breakout on all the charts, weekly, monthly, right? Of course, disclaimer, this is purely for education purpose, no recommendation, right? But see the breakout which has happened and it was the first one to make 52 bigger highs, right? Of course, अभी already breakout level से काफ़ी ऊपर जा चुका है, but ये बहुत अच्छा consolidation phase में आपको मौका दिया ऐड करने का, right? So this is where you stay with strong stocks, strong fundamentals, right? And you again ride them. तो आपको ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट देखा तो आपको 10 स्टॉक्स को बाय, इसी को आप प्रॉपर तरीके से पूरा राइड करोगे तो दैट्स अ वेरी बिग टारगेट ऑफ दिस पैटर्न, राइट. तो डेफिनेटली दिस इज द माय टेक अवे, स्टे विद स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स एंड डोंट ओवर ट्रेड. ऐसे मार्केट्स में क्या होता है, हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं एंड देन वी अगेन लूज मनी. ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, हमें फोकस करना है ऑन दो स्टॉक्स विच आर डूइंग गुड एंड कंटिन्यू टू राइड देम, ठीक है. वन गुड स्टॉक कैन गिव यू गुड रिटर्न्स, आपको 10 स्टॉक्स लेने की जरूरत नहीं है, ओके. सो विद दिस we come to the end of today's live. Thank you so much everyone for joining. We'll again have another live on maybe a Wednesday or Thursday as I feel good, because Wednesday को I'll try, because Thursday is the expiry day, तो हम expiry पे भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे क्या लग रहा है नहीं निफ्टी पे, ओके. So till then, take care everyone, good night, and I wish you a happy Holi in advance, and I wish you a great trading and investing week ahead. Okay, so thank you so much for joining. It was a pleasure talking to you all. Bye bye, take care, good night, and see you all next week. Bye bye.